Good morning, everyone. Today, we are going to look at the 5 year plans, which are actually made for the economic development of a nation and to keep a check on 5 year development plans. For India, these development plans started in 1951 and so on. They continue to 1951 to 1956, then 56 to 60, and so on. But there is a background story to it, how it started, who initiated, who was the chairman, what was the organization, and how it proceeded. So we are going to first look into that, and then we are going to see the first two 5 year plans in a brief detail. So let's start with the introduction. So Indian planning, it is an open process, and the plan making in India has evolved as a responsive democratic political process. Let me take a pencil. Yeah. Uh, so this was just some small introduction for the planning. Then history of planning in India and origin of the 5 year plans. So planned economic development in India, it began in 1951 with the inception of first 5 year plan, and therefore the efforts had begun much earlier. So before even starting these first 5 year plans, there were some small plans like the Bombay plan, which was in 1944, Gandhian plan, People's plan, which was in 1945, and the Sarvodaya plan, which was in 1950 by Jayaprakash Narayan. They were small step towards it, and these were all during or before the independence. But these for 5 year plans, they started after the independence, and for that the National Planning Committee was set up by Indian National Congress in 1938, right? So these smaller plans, which they say Bombay plan, Gandhian plan, and so on. So what are these? So for a brief detail, let's see. So the Bombay Plan 1944, 8 industrialists of Bombay, namely J.R.D. Tata, Purushottam Das Thakur Das, Lala Shriram, Kasturba Bhai Lalabhai, A.D. Shroff, Ardeshril Dalal, John Mathai, these all worked together and they prepared the Bombay Plan. It is recommended as a substantially interventionist state and an economy with a sizable public sector. So basically, they were promoting the industries for the economic development. Then the second was the Gandhian plan, again in 1944. The plan was drafted by S.N. Agarwal. He was a principal of Wardha Commercial College. And this plan emphasized on economic decentralization, कि सिर्फ एक ही सोर्स के थ्रू आप इकोनॉमी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यू हैव टू डिसेंट्रलाइज इट. हर एक स्टेट की अपनी स्ट्रेंथ है, और like agriculture production is more in Haryana and Punjab. So you will get more economic development from there, but industries could be developed in other states and likewise. So with primacy to rural development by developing the cottage industries. Then People's Plan was in 1945, drafted by M.N. Roy, gave equal importance to both agriculture and industries. तो दोनों को साथ में लेके चलना है. The plan was for 10 years and it recommended nationalization of all agriculture and production. Then Sarvodaya Plan, which was in 1950, drafted by Jayaprakash Narayan. It was inspired by the Gandhian Plan and the Sarvodaya, so basically agriculture and industry both. This plan emphasized on agriculture and small and cottage industries. Now, when we just say industries and cottage industries, the difference is that industry, they are also including the heavy industries. In heavy industries, it needs huge amounts of investment, but they yield very less in the starting initiation. But the cottage industries, they take very little investments, but they produce a large number of consumption goods, right? But again, they are labor intensive, so they cannot produce savings or they cannot help in economic development of the nation as vast as the heavy industries can. So that is the major difference. Then the 5 year plans, because this was till 1950, and after 1951 to 56 was the first 5 year plan. So this was, so from here the first 5 year plan after independence
starts, and if you have to see, the highest priority was given to agriculture, including irrigation and power projects. क्योंकि एग्रीकल्चर इरिगेशन के बगैर नहीं हो सकता, एंड इंडिया में देयर इज मॉनसून सीजन, जिस टाइम पे आपको बारिश मिलती है मोस्टली, और आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो हाईली डिपेंडेंट होती हैं रेनफॉल के ऊपर, एंड दैट इज़ वाई इरिगेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थ्रू वेरियस सिस्टम्स, ताकि क्रॉप्स में पानी आता रहे वेन एवर इट इज़ नीडेड. सो देयरफॉर ये इरिगेशन जो थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और ये बहुत कम थी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year प्लान, और उसको बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए थे, क्योंकि जितनी कल्टिवेबल लैंड इंडिया में थी उसमें से सिर्फ 20% ही इरिगेटेड लैंड थी टिल द 1956. मतलब 1951 से 56 तक हम सिर्फ 20% ही ऐसी कल्टिवेबल लैंड को इरिगेट कर पाए थे. तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो रहा था. इनफैक्ट हमें राइस और व्हीट के इम्पोर्ट्स करने पड़ रहे थे फ्रॉम अदर कंट्रीज, और so this was a major problem. So that's why irrigation projects and power projects, so hydroelectric projects also were initiated during that time. Second year plan में ज़्यादा initiate हुआ था. Then first 5 year plan aimed at increasing the rate of investment from 5 to about 7% of national income. So economy को बढ़ाने के लिए. और अगर हम first 5 year plan को देखें तो we will see. So first 5 year plans actually क्या होते हैं? They are centralized and integrated national economic programs. तो नेशन के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो इन फर्स्ट 5 year प्लान्स के अंदर आते हैं, और ये सेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब कि पूरी नेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, और इंटीग्रेटेड होते हैं. तो एवरीथिंग विच कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी विल बी इंक्लूडेड. Joseph Stalin implemented the first 5 year plan in the Soviet Union in the late 1920s. So वहाँ से ये मॉडल एक्चुअली हमने अडॉप्ट किया था. Most communist states and several capitalist countries subsequently have adopted them. तो इंडिया और चाइना ने भी किया, 5 year plans बनाए, फिर चाइना ने उसका नाम चेंज कर दिया, which is not important. So let's move further. After independence, India launched its first 5 year plan in 1951 under First Prime Minister Jawaharlal Nehru. The process began with setting up of Planning Commission in March 1950, which declared the objectives of the government. तो government के objectives क्या थे? To promote a rapid rise in the standard of living of the people by efficient exploitation of the resources of the country. कंट्री के पास पानी बहुत था, कंट्री के पास कल्टिवेबल लैंड बहुत थी, कंट्री के पास पॉपुलेशन बहुत थी, लेकिन हाउस कम थे, लेकिन डेवलप हो सकते थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती थी, इंडस्ट्रीज जनरेट की जा सकती थी. तो ये सब असेस करना था. देन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी. सो बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया, ठीक है, 1950 में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी. तो प्लानिंग कमीशन वाज चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग असेसमेंट. ठीक है, उसको बताना था, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, गवर्नमेंट को देनी थी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में कौन कौन से हैं. पहली बात तो augmenting deficient resources में which is coming on the top of my head, one would be oil. तो ऑयल की कमी थी, और कुछ मिनरल्स वगैरह, जिंक, सल्फेट, इन सब की भी कमी थी, तो ये सब डेफिशिएंट्स थे. फॉर्मुलेटिंग प्लान्स फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये बताना था. एंड डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज, हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहिए या हमें इंडस्ट्री को पहले बढ़ाना चाहिए, हमें हाउसिंग पहले लानी चाहिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या फिर इरिगेशन को, या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, या फिर एटॉमिक पावर प्लांट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. तो वो प्रायोरिटी सेट करना, असेस करना, रिसोर्स कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है, डेफिशिएंट कौन है, ये सब काम प्लानिंग कमीशन को दिया गया. तो फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च हुआ 1951 में. उसके बाद 2 सब्सिक्वेंट 5 year प्लान्स फॉर्मुलेट हुए 1965 तक.
तो 51 to 56, 56 to 60, 60 to 65. देन देयर वाज अ ब्रेक क्योंकि इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 2 successive years of drought, devaluation of the currency, a general rise in prices and erosion of resources. ये सब हो गया, बहुत सारे रीजंस आ गए, disrupted the planning process, and after 3 annual plans between 1966 and 1999, fourth 5 year plan was started in 1969. तो इस टाइम पे कोई प्लान नहीं था. 1969 में फोर्थ 5 year प्लान शुरू हुआ. फिर एट्थ 5 year प्लान जो था इट कुड नॉट टेक ऑफ 1990 में. तो ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर, और 90 से 91 और 91 से 92 तक एनुअल प्लान्स बनाए गए कि पूरे साल में हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने वाले हैं, ग्रोथ रेट क्या होने वाला है, एवरीथिंग. The eighth plan finally launched in 1992 after the initiation of structuralization policies. Then we see for the first 8 plans, the 5 year plans, the emphasis tha on growing the public sector with massive investments in basic and heavy industries. But since the launch of ninth plan in 1997, the emphasis on the public sector has become less pronounced, and the current thinking on planning in the country में planning कैसी है उसके ऊपर ज़्यादा emphasis दिया गया, that it should be increasingly of an indicative nature. We'll see how. So first 5 year plan, let's see. थोड़ा बहुत हमने पहले भी देख लिया, but let's see here. Target growth कितनी इन्होंने ज्यूम की, 56 तक पहुंचते पहुंचते टारगेट ग्रोथ क्या हो जाएगी 2.1%, और एक्चुअल ग्रोथ क्या हो गई थी 3.6%, विच वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल. इट वाज बेस्ड ऑन हैरेड-डोमर मॉडल. अब हैरेड-डोमर मॉडल क्या होता है, विल सी हियर. हैरेड-डोमर बोलता है कि सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल स्टॉक्स में लगाने के लिए ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा तो आउटपुट और इनकम ज़्यादा होगा, एंड सो द साइकिल मूव्स ऑन. और हमें यही चाहिए एक्चुअली, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. तो ये हैरेड-डोमर ने बोला. तो ये जो था ये हैरेड-डोमर मॉडल के ऊपर बनाया गया था. इसकी कुछ एक्चुअली ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, तो उनकी कुछ इक्वेशंस वगैरह भी थी like this. So it was an economic growth model, advanced capital economies to analyze the requirement of steady growth in such economy. तो मतलब ये बेसिकली इक्वेशंस के ऊपर वर्क करते हैं और उसमें ये कुछ assumptions बताते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड सो ऑन. तो अगर किसी को डिटेल में देखना है so they can read it, बट बेसिकली इसके ऊपर बनाया गया. एंड तो अब इस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्या थी, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, क्योंकि वॉर खत्म हुआ था और उस साइड से साइड लोग आ रहे थे, और भी इश्यूज थे. सीवियर फूड शॉर्टेज, क्योंकि इरिगेशन नहीं था, जमीन भले थी बट पानी नहीं था एंड ऑल. माउंटिंग इन्फ्लेशन confronted the country at the onset of the first 5 year plan. यहाँ से first 5 year plan शुरू हुआ, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था. फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट. It was a successful plan primarily because of good harvests in the last 2 years of the plan. मतलब लास्ट के 2 years तक पहुंचते पहुंचते इरिगेशन लेवल थोड़ा ढंग का हो गया था, जिससे कि हार्वेस्ट जो थी वो अच्छी प्रोडक्शन में आ गई थी. Objectives of rehabilitation of refugees, food self-sufficiency and control of prices were more or less achieved. Right? So ये first 5 year plan था. Now let's see in some detail. So the first large-scale multi-purpose river valley project, Hirakund Dam, everyone must know this, or कहीं तो सुना होगा, on the Mahanadi river in Odisha was built during the first 5 year plan. 1952 में Jawaharlal Nehru inaugurated the Bhakra Nangal project. During this period, many other irrigation projects were started, including Damodar Valley dams. तो irrigation के ऊपर बहुत काम हुआ क्योंकि agriculture पे ही सारा focus था. Second, since the first 5 year plan, the considerable emphasis had been laid on the land reforms
as the 3/4 population of the country was dependent on agriculture for their income. 70% लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड था और वो सब इसके ऊपर डिपेंडेंट थे. In 1951, the government abolished the जमींदारी सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से लगाया गया था कि टैक्स वसूलना है वाला. तो और एक ही बंदे के पास पूरी ज़मीन होगी और उनके अंदर सब काम कर रहे होंगे, तो वो जमींदारी सिस्टम हटा दिया था and pronounced the land to the tiller policy, abolishing the intermediaries and regularizing the tenancies. Right. With the abolishment of intermediaries, the land tenures were now in the hands of landlords. जिसका land था वही सब कुछ उगा रहा था, अपनी मर्जी से कर रहा था, जितना लगाना था उतना फूड क्रॉप लगा रहा था, बाकी वरना एक्सपोर्ट करने के लिए लगा रहा था. Who cultivate the land, and tenants who hold leased land from the landlords. During the first 5-year plan, India had its first general election of Lok Sabha. तो 51-52 तक हिमाचल प्रदेश ने वोट किया लोकसभा इलेक्शंस के लिए 51 में. Then 1952 में इंडिया launched the National Family Planning Program, जिसके अंडर they aimed to lower the fertility rate and slow the population growth as means to propel economic development. 2nd October 1952, Jawaharlal Nehru introduced the first major development program, community development program, जो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप की थी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए और रिसोर्सेज को असेस करने के लिए, प्रायोरिटी सेट करने के लिए. तो उसमें ये जो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो 1952 में देखा गया. In village Narela at the outskirts of Delhi, followed by 5011 blocks in the country with motto as Collective Self-Reliance Program. The program provided an administrative framework so that the government might reach the district, tehsil and village levels. All the districts of the country were divided into blocks. Block Development Officer appointed as in charge of each block. Below the BDO, village level workers were appointed who keep in touch with 10 to 12 villages. तो मतलब काफी framework में काम हुआ. However, the community development program failed to implement all over India due to less participation of people and shortage of funds. The government therefore decided to launch another program alongside the CDP with the idea of having a wider range and more people's participation. So 2nd October 1953 में the Indian government inaugurated the National Extension Service Program. अब इसमें क्या हुआ? The program launched with stress on agriculture, social education and rural communication. The basic idea underlying both the NES, National Education Service Program, and CDP, Community Development Program, was the same. Funds were reduced for NES blocks and each NES block had about 100 villages. उसमें 10-12 थे. NES के अंदर 100 villages आते थे हर एक block के अंदर. During the first plan, the Indian government with the World Health Organization addressed children's health and reduced infant mortality, indirectly contributing to the population growth. तो WHO के साथ काम किया. During the first plan, India signed the Panchsheel Agreement with China on in April 1954. India also took part in Bandung Conference 55-54 में adopted a resolution on socialistic pattern of society as objective of economic policy. 55, Indian National Congress officially adopted the resolution to establish a socialistic pattern of society as a goal of the party. 56, University Grants Commission was established to take measures to strengthen higher education. तो colleges वगैरह काफ़ी institutes develop हुए, IITs वगैरह setup हुए, जो 5 IITs हैं. SPA Delhi भी setup हुआ था. Then UGC also took care of funding for higher education in the country. At the end of first 5-year plan, the 5 Indian Institutes of Technology were started as major technical institutions. So achievements क्या क्या हो गई? Targeted growth rate was 2.1 gross domestic product every year and the achieved growth rate was 3.1. Major success. Food grain production increased from itna million tons 52 to 67 million tons in 56. Although the target of the national income growth was 11, the actual increase was 18%. During this time, per capita income increased by 11%. Industrial index production as base year rose from 100 in 1950-51 to 139 50-56 with annual growth of 7.8%. So everywhere it was a major success. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो चुके थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. जो प्रोजेक्ट्स फेल हो गए थे उनके ऑल्टरनेटिव में दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए थे. So it was a good success, it was a good start. So this was about the first 5-year plan.
And since it's a 20 minutes video, I think I should stop it here, and we will continue with the second 5-year plan in the next video. Now, if you have seen the video till end, I guess there is no harm in subscribing the channel and liking the video. Thank you very much.